going to talk about a very interesting topic, nurturing early language development. Well, we all know at the Baby Chakra community, mom stars are waiting to have an interaction with the best and the leading pediatricians around the country. Also, when we talk about early childhood development, we mothers are so conscious and we want the best for our child. So, to have an amazing conversation with Dr. Kunal, who is going to help us with an insight on what does early language development means, and also what are the benefits and how do we recognize this as an important milestone. Well, we take this pleasure and introduce you, Dr. Kunal, for this session. Dr. Kunal, it's lovely you joining on this session. How Yeah, are you doing today? yeah. Thank you, Dr. Vijay. It's all fine. So, Dr. Kunal, can you tell something about yourself, please? Yeah. Okay. Good afternoon to all the viewers on the Baby Chakra app and all the parents. First, out the outset, I would like to thank this Baby Chakra app for again giving me the second opportunity to have a direct one-to-one communications with all the parents on the Baby Chakra app and other social media platforms. Myself, Dr. Kunal Kumar Jaiswal. I'm a practicing pediatrician and with a special interest in the field of allergy and asthma. I have been working with the district hospital in the Ramgarh, the state of Jharkhand, for last 3 years, and also practicing the allergy. I have pursued my MBBS from the West Bengal, and I did my post graduation from a Hirandani hospital in the Mumbai, and pursued my allergy asthma course from the Pune. So I've been in this field for last almost 5 years, and that is and again want to thanks again for inviting me in this field and to have a good conversation on the very good important topic of the early language development. Right. So thank you, Dr. Kunal. And we are glad that, when we talk about early childhood development, early language development is one of the aspects that we mothers do consider. कि मेरा बच्चा बोल नहीं सकता, बोलने की कोशिश कर रहा है, the words are coming out from his mouth, और basic thing is बच्चा मदर टंग में बोलता है या नहीं. Well, to know all these things, Dr. Kunal, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि what does early language development mean? और इसका संबंध हमारे डे टू डे लाइफ में किस तरह से महत्वपूर्ण है? Yeah, very good question. See, as you said, it's the early language development. So first we have to understand what is the difference between the growth and the development. When we measure the height and the weight, we are focusing on the growth of the baby. But Right. development means the gross, in all the milestone, like it's the gross motor, like running, walking, fine motors, movement. So like there are 5 pillars are there, like motors, fine motors, gross motors, language is one of the important social skills, and hearing and the visuals. So of this, for development of all the 5 pillars of the development, that ensure a complete development of a child. So one of the Okay. important is the language. So when you say the development, it's automatically language is one of the important component of that. And now what do you mean by the early language? So early means you have to understand when the babies are born, the initial 1,000 days of the baby, including from the time of conception, is very, very vital, because the brain, which is almost 90% developed by the age the child has attained 22 to 3 years of age. So the earlier we target, the earlier you utilize the maximum potential of the brain for the development over the development of the child, the earlier we will get a better results. So the word what we mean is early, when we are nurturing the or practicing, making all the efforts for overall development of the child from the very outset, and within the first 2 to 3 years of the life, then we say it is the early language development stage. So what early means, targeting for all the development prior to 2 to 3 years of the age, when the brain is open for to accept all the opportunity you are throwing at the babies. So that is mainly the early language development means. Right. So when it comes to early language development and when it is identified, are there any stages or are there any steps in identifying these or going about it? So can you throw some light over here? Yeah, see, the overall, if you compare it with the development of the stages of the language development, there are broadly multiple stages. Just to keep it short and precise, broadly there are 3 stages we say. One is Okay. said with the prelingual stage, prelingual, which is usually from the birth to the first year of the child. Then we say the early lingual phase, which is from the first to third year of child. And then the third stage, which comes beyond 3 years, which is called the differentiation stage. So let's come to the first stage one. That is the 0 to 1 year, from the time of birth to 1 year, prelingual. As the word depicts, prelingual means tongue, something which is not spoken from the tongue, but Mm-hmm. still it is a language. So first you have Okay. to understand what is language. Language is just an important tool to communicate.
the child uses to communicate. A crying child is also communicating with you. The language here is crying. A, Okay. a babbling child, maybe saying ba ma, is not a complete spoken language, but that is a language that child is using at 0 to 1 year of age, which is called a prelingual phase, to communicate with this. So that is the importance of the prelingual phase, where the spoken word is not there, but there are other gestures are there, smiles are there, different pointing or things there, or the incomplete words, like we say the monosyllables and bisyllable, like babbling, like ba ba ba, ma ma. This is not a typical language what a common layman understand, but that is a language for the children from the birth to 1 year, and that is called the prelingual stage of development. Second, we comes to the second stage, which is called the early language development. Here onwards, this is applicable to the child from first year, completed 1 year, till the third year of age. Here the child starts speaking the words. And this is sub for this, if you divide further, subdivide into 2 to 3 stages, like one word sentence stage. We have two word sentence stage and two and more word sentence. When a child completes 1 year, we say he is able to, approx 1 year, he is able to say one word sentence, things Yes. like papa, like mama, one word sentence. Yes. Similarly, when he completes 2 year or 18 to 18 months to 24 months, he says two word sentence. By 3 years, he says more than two word sentences. So that is called the early language. And beyond 3 years is a differentiation stage, where the child acquires the skill to differentiate between the words. Child acquires the skills with respect to pronunciation. There may be a difficulty in pronunciation, but still they acquire this. They acquire the skills on grammar. They acquire the skill how to arrange the words to form a sentence. How to form a sentence when they are saying a story. Because yeah, after 3 years, you see, they can say your name. They can say your name. They can say parents' name. Even after 3 to 4 years, they can narrate the story. So narration of a story needs a, you have to arrange the words, you have to arrange the sentence. These all stages, these skills are acquired after this, and that stage is what is called the stage of differentiation. So basically, broadly, we say these three stages are there: pre-lingual stage, up to 1 years; early lingual phase up to 3 years, and beyond that is called the differentiation stage. Right. But at a given point of time, there could be some challenges or there could be some difficulties which the mothers face. And, there are many people who might be giving them a lot of advice. Society might be telling them in some other different way. But can you help us to identify what are the challenges that could come in during these developmental phases, and so that a mother can easily identify and approach an expert who can guide her the best? See, it is very important thing. What is important is the challenges that we are facing in this era. The most important is challenges that we are not paying a sufficient time. We are not spending sufficient time with our kids. Being a busy era, both the parents are working. We are not giving sufficient time to this. What most important thing is the development of the language is you have to be a talkative parent to your parent. You have to take kids. Okay. And the more you talk to your parent, to your kids, you are helping them to acquire the language. You are helping them to acquire the early language development. So the challenge is you have to talk to your kids, and for talking to you needs the time. So those most important thing you have to spare, you have to bring the time to talk to you well. Whenever, for example, I just give you an example. A child is thirsty or he's Mhm. hungry, he may crawl down to your kitchen. He may point out to a water, or may point out to a biscuit or cookies, whatever. So what you have to say, if he's pointing, you may take the baby to the kitchen. Then you can just ask him, you want a water, you want a cookies. If he's not pointing, you can take one by one. You can bring a cookies and whatever he wants. And then he will, by a gesture or something, by crying or by eyes movement, he will point to that. Then you have to say, okay, you wanted a cookies. So this is a cookies. So this Okay. is how you are introducing a word into the mouth, in the mind of the baby. This is called cookies. He may not speak out. So until and unless your brain learns the word, listen to the words, your child cannot speak. For Right. example, a child who cannot listen, you must be acquiring that कि he cannot speak also. What I mean, जो बच्चा बच्चा बोल नहीं पाता है, ये जो उसमें, अगर हमारे पास कोई बच्चा आता है, मोस्ट कॉमनली जो आता है हमारे पेरेंट, ये बच्चा बोल नहीं पाता है, तो हमारा पूरा जो असेसमेंट हम लोग करते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट असेसमेंट हमारा होता है बच्चे का हियरिंग का। Mm-hmm. कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा सुन ही नहीं पाता है। तो अगर Mm-hmm. बच्चा सुन नहीं रहा है, तो वो कमांड आपके ब्रेन को नहीं जा रही है। अगर Mm-hmm. वो ब्रेन को नहीं जा रहा, तो वो ब्रेन के लिए वो वर्ड नया है, और बच्चा उसको कंप्रिहेंड नहीं कर पाएगा, फिर ये बोल नहीं पाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाती है कि बोलना, बच्चा को सुनाना। तो यहाँ पर कौन सुनाएगा? एज वी ऑल नो, द पेरेंट्स आर द
सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बिगनिंग में बच्चे के सबसे टीचर्स होते हैं तो वो पेरेंट्स ही होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चा जब भी जन्म हुआ, आपको उस समय से हर चीज़ आपको इंट्रोड्यूस करना है, हर चीज़ उनको बताना है। आप कहीं भी सराउंडिंग में भी आप लेके जाते हैं, उनको बोलना है ये पंखा है, ये है, ये वो है। आपको लगता है कि वो नहीं समझ रहे, वो सब कुछ समझ हमारे से बच्चों हमारे बच्चों का दिमाग बहुत 10 गुना। आप ये भी नोटिस कीजिए, अगर हमारे पास कुछ लैंग्वेज सीखना है तो हमारे को सीखने में बहुत टाइम लगेगा, बट एक न्यू राइट। बॉर्न को आप जिस लैंग्वेज में, बहुत बार ये इशू भी आते हैं हमारे पेरेंट्स के साथ। कोई एनआरआईज है जो कि दे स्टे इन द फॉरेन नेशन, अब वो इस चीज़ को टारगेट करते हैं कि हमारा बच्चा मदर लैंग्वेज नहीं बोल पाता। तो इसमें इशू यही होते हैं कि आप इंट्रोड्यूस करना है आपको, आपको उस बच्चा जिस सराउंडिंग में रहेगा उसी लैंग्वेज को अक्वायर करेगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको मदर लैंग्वेज है तो आपको उस लैंग्वेज में बच्चे से इनिशियली कम्युनिकेट करना है। बहुत बार ये भी प्रॉब्लम होता है कि आपने एक साथ ही 2-3 लैंग्वेज बच्चे में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बहुत है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है एंड दैट लीड्स टू लैंग्वेज डिले। सो ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कि आप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं उस लैंग्वेज को बच्चा जल्दी एक्वायर करता है। आप बच्चे से जितना जल्दी जितना बात करेंगे बच्चा उतना जल्दी ही लैंग्वेज उसका डेवलपमेंट में फेज में आएगा। कुछ भी होता है, आप अगर उसको खाना भी खिला रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी करवा रहे हैं, आपको बताना है कि मैं आपको कुछ भी खिला रहा हूँ, अगर रागी खिला रहे हैं तो रागी खिला रहा हूँ, ओट्स खिला, जो भी हम्म। खिला रहे हैं आपको उनको बताना है ये खिचड़ी है। ये आप जितना कम्युनिकेट करेंगे ब्रेन को उतना स्टिमुलस जाएगा। एंड एज आई टोल्ड इन वेरी बिगनिंग, 2 साल 3 साल के बच्चे का ब्रेन फुल्ली ओपन टू ऑल द पोटेंशियल्स होते हैं। तो आप जितना ब्रेन को स्टिमुलेट करेंगे, ब्रेन उतना ही उस चीज को वो ऑक्यूपाई करेगा एंड देन यू विल लर्न। क्योंकि 2 साल 3 साल तक लिए आप कितना जितना भी यूज करते हैं उसके बाद ब्रेन भी रीड आउट करता है कि इस बच्चे में ये इनको चाहिए, बाकी सबको वो आउट कर देता है। तो आपको कोशिश करना है कि 2 से 3 साल में हर चीज के लिए बच्चे को एक्सपोज करे ताकि आगे उसके लिए मल्टीपल पोटेंशियल्स रहे। ये और चैलेंजेस क्या आते हैं, मैं आई जस्ट फिनिश इट ऑफ वन। या और श्योर, यू कैन। या अब कॉमन इशू और चैलेंजेस क्या आते हैं, कभी कभी हेल्थ का इशू आता है, जो बच्चा हमेशा ही बीमार पड़ता है तो नेचुरली है वो भी एक इशू होता है जो कि लैंग्वेज को डिले कर सकता है, क्योंकि आप बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, हाफ ऑफ द टाइम इज हॉस्पिटलाइज, इज नॉट इन द हेल्थ कंडीशन, इज नॉट टू एक्वायर। तो न्यूट्रिशन चाइल्ड का इंपॉर्टेंस है, बच्चे का हेल्थ का इंपॉर्टेंस है, फैमिली इशू इंपॉर्टेंट होना चाहिए, पेरेंट्स में अच्छी हारमोनी होनी चाहिए, घर का सराउंडिंग का इन्वायरमेंट अच्छा ना, वो भी बच्चे में बहुत इंपॉर्टेंट करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। आप ये भी चीज़ देखें। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी होता है, और आप देखते हैं रिच फैमिलीज में बच्चे थोड़ा जल्दी ज़्यादा बोलते हैं इन कम्पेयर टू पुअर फैमिली। उसमें रीज़न यही होता है कि पेरेंट्स ज़्यादा अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे के बाद ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस हैं जो कि, और आज के युग में सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज होता है स्क्रीन टाइम। हमें 2 साल से कम बच्चों में स्क्रीन टाइम एकदम ही नहीं देना है, दैट इज अ पैसिव मोड। ये चीज़ आपको समझना है। हमारे बच्चे को इंटरेक्ट करने के लिए वी वन वन टू वन, वी हम्म। चाइल्ड इज लाइक, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो स्क्रीन टाइम को भी हमको लेस देन 2 ईयर्स में एकदम ही स्क्रीन टाइम को अवॉइड करना है। तो दीज आर द कॉमन चैलेंजेस एंड दिस इज हाउ वी कैन ओवरकम दिस। राइट। डॉक्टर, एक मेरे पास माँ का सवाल है। शी इज़ अ न्यू मदर एंड बेसिकली हर हर चाइल्ड इज इन द बिलो 2 years of age, and she's like, I give a screen time just for a few minutes so that she can learn new things like YouTube पे rhymes है या ये है। तो क्या ये सही तरीका है चाइल्ड के डेवलपमेंट को अप्रोच करने का, या उनको बिल्कुल भी हम लोग स्क्रीन टाइम मना कर देंगे और हम जो बात कर रहे हैं, बुक्स जो दे रहे हैं, उस ट्रेडिशनल मेथड से नहीं, दैट आगे इज फाइन, बढ़ाएं? दैट इज फाइन। व्हाट आई मीन इज कि कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स क्या बोलते हैं, बच्चे को मोबाइल देख के ये किसी काम में चले गए, दैट इज बैड। अगर आप उसको टीचिंग के लिए स्टिमुलेट करने के लिए, जैसे हम लोग हमारे को यूज करना है, वी यूज फ्लैश कार्ड मेथड्स, दैट इज वन हाँ। ऑफ द वे ऑफ टीचिंग दिस, राइट। तो अगर आप किसी टीचिंग पर्पज के लिए कुछ के लिए यूज कर रहे हैं फॉर अ टाइम फ्रैक्शन, तो वो ठीक है, क्योंकि आप उनको इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ पैसिव, नाउ यू आर मेकिंग इट एक्टिव बाय यू करेक्ट। योरसेल्फ इंडल्जिंग इन दिस। सो दैट शुड बी अर्न। तो वो चीज़ आपको इसमें इन्वॉल्व होना है। अगर आप कुछ बताने के लिए, पढ़ाने के लिए आप पैसिव ना कि एक्टिव मोड में यूज कर रहे हैं तो ठीक है, बट दैट शुड बी कमिंग। यहाँ पर स्क्रीन टाइम में ये भी नहीं है कि वीडियो कॉल्स, चैट कॉल्स, ये सब नहीं, ये सब अलाउड है, बट व्हाट आई मीन फ्रॉम द स्क्रीन टाइम कि बहुत बार क्या होता है, आप बच्चे को आप मोबाइल दे के आप बिजी है काम में, खाना खिलाने समय इस मोबाइल पे, वो बच्चे को ज़्यादा हार्म करता है, क्योंकि बच्चा उस पर हो जाएगा तो वो बाकी लोगों से कम्युनिकेट नहीं करेगा इसके रिगार्डिंग। ओके। राइट। सो डॉक्टर कुणाल, आपने जो जानकारी दी है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, और हम आशा करते हैं कि कम्युनिटी में जो हमारी मदर्स है उनकी सहायता के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रही होंगी। परंतु इफ़ यू कैन गिव अस अ टेक अवे मैसेज होम for the mothers who will be probably viewing this session later, it will be quite helpful, and it will help us, to give a strong message why early language development is a necessity and the need of the hour. Yeah, so just one line I will say, 2 lines. Important thing you have to understand,
less than 2 to 3 years, brain is almost 90% developed. So this time period you have to target to acquire the maximum potential for your child. And second, be a talkative parent to your kids. टॉक टू योर चाइल्ड. बच्चे से आप जितना बात करेंगे, कुछ भी एक्टिविटी में इंडल्ज है उनको, उनसे बात कीजिए, कुछ भी पॉइंट करते हुए बात कीजिए, समझाइए. बी आर टॉकेटिव पेरेंट्स एंड दिस टू विल हेल्प यू टू अचीव द अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट. राइट. और डॉक्टर कुणाल ने जो जानकारी दी है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उनका कीमती समय उन्होंने निकाल के ये हमारे आज के लाइव चैट में पार्टिसिपेट करके उन्होंने हमारी क्वेश्चंस को आंसर किया. सो इसलिए फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ द बेबी चक्र कम्युनिटी आई थैंक यू for giving your valuable time and your inputs. They were really, really helpful. And I hope that the mothers, in this Baby Chakra community have a beautiful insight. And also, I appeal to all the members in the community. Dr. Kunal is available with us on our Baby Chakra app. So if you have any questions, please ask him. Also, you can join our WhatsApp community and also download the Baby Chakra app to stay with the community and understand how things are perceived by other members of the society as well. So, Dr. Kunal, thank you for joining us on this valuable session. Thank you, thank you, thank you. Okay, so I would like to thanks for this again, for this is the opportunity. So myself, Dr. Kunal Kumar, I am available on the Baby Chakra app. You, if you have any query, you may not have joined for a live session. So later on, whenever you watch this video here, drop your questions. If you have any queries, I will be available for there to help you out. And I have also have my YouTube channel with the name of Prabha Childcare. You can follow me there also. And once again, I'd like to thanks from Baby Chakra app for giving this more opportunity. Thank you. Thank you, everyone, for listening us live.